essay preparation and GS paper 1, paper 2, and paper 3, 4. So we will be discussing all these papers and strategy, and we will be resolving your doubts also. So now today it is about essay. So before discussing the strategy of essay, I would like to know from you 2-3 questions mainly. Like I have heard that many of you have appeared for the mains exam. So I would like to hear from you what difficulties you face in essay, and any particular kind of question would you like me to answer for you. So those who have appeared for the mains, or otherwise also those who are writing essay and facing some difficulties, please throw some questions to me. And based upon those, I will take the discussion forward. Hello, sir. Amit Kumar here. Yes, Amit. Sir, I have written 21 mains and 22 mains. Earlier, sir, normal conventional type of essay topic like women, democracy, I attempt in very fair manner, but that philosophical type, sir, new trend coming now, sir, so I am not able to attempt in that best possible manner. So please throw light some on philosophical essay. That's all. Okay, so the one question is about a philosophical essay, the different version of that. Okay, any other question? Good evening, sir. Deepak this side. Yes, good evening. Yes. Yeah, sir, the interpretation of a philosophical topic is always a challenge. For example, in 2021 mains, though I wrote a relatively not a better essay, though I got 117 marks, but this time I tried more like level better, but then also I scored like in 105. So I feel in my second essay, the interpretation was wrong. So what should be like some objective parameters on which the interpretation of an essay should be made? Okay, so second question is about interpretation of the title of the essay. We have to be very careful in about interpreting. Okay. Third, any third question? Hello, sir. Sir, Rupesh this side. So, sir, I've written 3 mains. So I am getting around like 120 marks or like all the 3 times. One I've got around 110. So I have little problem in philosophical essays, but main problem arises in like time management. So for example, in all 3 attempts, my first essay took around 1 hour and 45 minutes, 1 hour and 40 minutes. So like I think I'm not able to get that above 120 or something in range of 140 marks. Okay. So this question is about how to manage the time for 2 essays in 3 hours. It usually happens that first essay we keep on writing for 2 hours, and then we get lesser time for the second essay. Okay, so these are main questions. And I would like to hear from someone who has not appeared for the mains exam and still preparing for the essay. Is there anyone who is preparing writing essay but still not appeared for the main exam? Any questions from them? Sir, I'm Kajal. I have written mains in 2020 and also appeared for interview. Although I got 132 or 136 in essay, but I like to know how to select the on which essay we should write. And second is structuring of essay, means in paragraph form or small paragraphs or whatever. Okay, so this question is about how to select the topic out of given 4 topics, and what structure should we follow while writing the essay. Fine. Yes. Okay. Any more, any new question which is not related to these 4 questions? Anyone? The last one. I will take the last question. Okay. No more questions. So these are the main 4 questions we will discuss, and otherwise also we will discuss the full essay strategy. No problem. Now that first let's talk about the philosophical essay, which you are, which 2 of you said, and many others also have the doubt. See, up till you can say 2020 exam,
you have to choose two essay out of those. One was very kind of a technical topic in which you could write about any journal issue, women hai, child hai, technology hai, or so that was very technical, and it was very title to, and you could write other knowledge of your general subjects. So, and another essay was the philosophical, where you have to talk about say happiness, emotions, or those were very to write. I can, but now in for past two exams, 21 and 22, these lines between this technical topic and the philosophical topic, now this line has blurred. Or you can say that this particular topic is significant only. Two part, one in the part A and part B, where you have to choose two topics. In both, so that okay, so in that you have to choose two philosophical topics for both the essays. So it has been well. You should think that I will be able to write one technical essay and another is the philosophical. I will handle it somehow. You have to be well versed on in getting both of the essay as well. Okay, this doubt needs to be cleared first. Second, how to choose, because now both the essays are philosophical only. So how to choose among those? See, first of all, it depends on your practice. Now, and how do you practice on choosing the topic? So it is about you read the title, and apply 5 minutes into that, and now that is called dissection of the title. Do the dissection of the title, like how many different dimensions are there in the title. If title is very short and there are you can only interpret one or two dimensions only, so it will be very difficult to write on that essay. If title is quite long and there are 3-4 words into that, so you have more dimensions and you have more room, more space to write about those 3-4 words at least. So first of all, this is the main thing, that you have to dissect the title into 3-4 things. Then you see whatever title you read out of those 4, try to gather the knowledge instantly, whatever you have read in other GS topics, in newspaper, in any magazine, or in any book. फॉर एग्जाम्पल अमरेश सर बुक रीडिंग सेशन करवाते हैं, तो वहां पे बुक रीडिंग होती है और कोई भी एक किसी की चॉइस की, और फिर बुक का रिव्यू होता है. सो आप में से भी काफी लोग हैं जो ये हैबिट रखते हैं कि मेरे को बुक पढ़ना अच्छा लगता है. तो आप ये सोचिए कि जो टॉपिक आपने जो भी टॉपिक आपके सामने है, उससे रिलेटेड आपने कोई बुक पढ़ी है क्या? किसी से भी रिलेटेड, कोई भी पॉलिटिकल लीडर है, या फिर इकोनॉमिक सिचुएशन है कंट्री की, या फिर वुमेन सिचुएशन है, और वो टॉपिक क्या है. फॉर एग्जांपल युवल नोआ हरारी ने होमो सेपियंस बुक लिखी है. सो दैट इज अबाउट द इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमंस. सो दैट इज नॉट अबाउट पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स, लेकिन इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन, और इवोल्यूशन कैसे कैसे हुआ है, एंड हाउ द कैरेक्टर ऑफ द स्पीसीज हैज चेंज. तो उसमें उससे रिलेटेड कोई टॉपिक है क्या? तो ये आप जब देखेंगे कि आपने जितना भी आपने 1 साल में पढ़ा है, 2 साल में जीएस प्लस आपकी बुक, उससे रिलेटेड कोई 2 टॉपिक देखिए, तो इजी हो जाएगा आपके लिए उस टॉपिक पे लिखना. और या फिर उसके अलावा आप ये देख सकते हैं कि ये जो टॉपिक है वो आज के टाइम पे करंट अफेयर्स में कितना रिलेवेंट है. देखिए, जो टॉपिक ज्यादा रिलेवेंट नहीं है उसके बारे में आप ज्यादा नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि आपने पिछले साल 2 साल में उसके बारे में ज्यादा पढ़ा भी नहीं होगा. लेकिन जो टॉपिक रिलेवेंट है और आज की करंट अफेयर्स की न्यूज में है, फॉर एग्जांपल रशिया यूक्रेन वॉर है, जियो पॉलिटिकल सिचुएशन है, जियो इकोनॉमिक क्राइसिस है, और या फिर उसके अलावा आप देख लीजिए कि चाइना का जो सिचुएशन है जो कि बहुत ज्यादा डेवलप हो रहा है एज कम्पेयर टू इंडिया, और डिसास्टर है फॉर एग्जांपल. तो जो करंट अफेयर में चल रहा है, जो रिलेवेंट है और जिसके बारे में आपको बहुत सारा नॉलेज भी है, ऑब्वियसली वी नीड अ कंटेंट ऑफ अराउंड 2000 वर्ड्स. तो आपके पास में कंटेंट है, रेलेवेंसी है, तो आप वो ऐसे लिख सकते हैं.
सो ये 3-4 फैक्टर्स होते हैं हाउ टू चूज द टॉपिक. देन वी कम इनटू द थिंग दैट उसका टाइम मैनेजमेंट कैसे करेंगे. देखिए दोनों ऐसे इक्वल मार्क्स के हैं, देयर इज नो डाउट इनटू दैट, 125 मार्क्स ईच. So it automatically suggests that we have to give equal time to the both these essay. तो आपको एक ऐसे 1.5 घंटे में ही लिखना है. आप अभी से प्रैक्टिस कीजिए. मेंस एग्जाम से पहले तो आपको 10 ऐसे प्रैक्टिस कर लेने हैं. अभी से प्रैक्टिस कीजिए कि आप हर ऐसे को आप 1.5 घंटे में ही लिखेंगे. टाइम ओवरशूट हो जाता है अभी प्रैक्टिस के दौरान, तो आप ऐसे उस ऐसे को वहीं के वहीं छोड़ दीजिए और अगला ऐसे लिखिए 1.5 घंटे में. और ट्राई टू फिनिश दैट ऐसे एटलीस्ट 10 मिनट बिफोर, ताकि आप जो पहला जो ऐसे है जो आपका बच गया है आप उसको फिनिश कर सकें. देखिए फिनिश दोनों ऐसे को करना जरूरी है, क्योंकि आपने शुरू तो कर दिया. नाउ यू हैव रीच्ड अप टू लेट्स से फॉर एग्जांपल 800-900 वर्ड्स, और आपने उसको फिनिश नहीं किया जिसमें आपको लिखने होते हैं. तो आपने बहुत दिन जाता है, वो आप वो यही नहीं समझ पाएगा कि आप कंक्लूड इसको किस डायरेक्शन में करते. जो टॉपिक था आपने उसको कंक्लूड कैसे करते, आप उसमें क्या आप सॉल्यूशंस देते, और क्या आप उसमें वो कुछ बता पाते, कोई नई चीज, कोई इनोवेशन. तो वो समझ नहीं पाएगा, और वो समझ नहीं पाएगा तो वो आपको ढंग से इसमें इवेल्युएशन मार्क्स नहीं दे पाएगा. तो कंप्लीट तो करना ही है दोनों ऐसे. ओनली दैट यू हैव टू प्रैक्टिस इट वेरी इन लाइक 5 to 10 पेपर्स, जिसमें आप 2.5 घंटे में कंप्लीट करेंगे. और अब बात आती है कि अब 1.5 घंटे में एक ऐसे को कंप्लीट कैसे किया जाए. अब इसके बारे में क्या है, स्ट्रेटेजी बना. अब नाउ वी विल टॉक अबाउट द स्ट्रेटेजी ऑफ एसे एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द एसे, हाउ टू राइट द एसे एंड हाउ टू कंप्लीट इट इन 1.5 आवर. देखिए मेरे जो एसओपी रहा है ऐसे को लेकर, जिसमें आई हैव गॉट वेरी गुड मार्क्स कंटिन्यूअसली, वो है डॉक्टर खान की स्ट्रेटेजी है ऐसे की, ऑफ खान स्टडी ग्रुप. तो दैट इज अवेलेबल ऑन यूट्यूब ऑल्सो. वो मैं आपको लिंक सेंड करूंगा. एंड बट मैं उस स्ट्रेटेजी के बारे में थोड़ी बात कर लेता हूँ. सर कैसे डिस्कस करते हैं उसको बारे में. ओके, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, है ना, प्लीज होल्ड ऑन. हेलो, एम आई ऑडिबल? यस सर. ओके, सो मैं भी पर्टिकुलर एक स्ट्रेटेजी डिस्कस करता हूँ विच आई विल टेक अराउंड 5 to 10 मिनट्स. थोड़ा डिटेल में बताता हूँ आपको. देखिए जो भी टॉपिक आपने चूज किया है, टॉपिक चूज करने के बारे में हमने डिस्कशन किया है, उसको उससे ज्यादा भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं कि वो टॉपिक चूज करने के लिए क्या क्या हेल्प चाहिए. अब आपने जो टॉपिक चूज कर लिया है उसके बाद में कम आउट विद ए थिंग दैट इंट्रोडक्शन शुड बी कैची. एग्जामिनर को समझ में आना चाहिए कि आपने जो टॉपिक जो है टाइटल है वो समझ गए हैं आप. दूसरा, टाइटल के बारे में आपको कोई कुछ ना कुछ आप इंटरेस्टिंग चीजें अगर बताते हैं विच इज न्यू और विच इज एंशिएंट एज वेल, जो कि कॉमन बुक्स में नहीं मिलती है. तो आप खुद सोचिए कि आपको किसी के बारे में कोई नई कहानी पता लगती है, तो फिर आप सोचते हो अरे यार ये भी था, इसका ये भी एंगल था. तो आप सरप्राइज हो जाते हैं और आपको अच्छा लगता है कि हाँ कुछ नई इन्फॉर्मेशन आई है, कोई बेसिक इन्फॉर्मेशन नहीं आई है, कुछ नया है. तो एग्जामिनर इसलिए इम्प्रेस हो जाता है कि हाँ समथिंग इज न्यू. अब जैसे विमेन के बारे में है, विमेन के ऐसे तो आते हैं ना, हर साल आते हैं.
लेकिन आप अगर बेसिक चीजें ही लिखेंगे विमेन के बारे में कि विमेन का डेवलपमेंट नहीं है तो नेशन का डेवलपमेंट नहीं है, बड़े महान पुरुष ये कहते थे, महान पुरुष भी जो भी कहते थे, दैट हैज बीन रिपीटेड क्वाइट सेवरल टाइम नाउ इन ईच एंड एवरी एसे ऑफ कितने 10,000 लोग एग्जाम्स लिखते हैं, 10,000 लोग मेंस लिखते हैं, और अब तो 15,000 हो गए। तो अब विमेन के बारे में यू हैव टू बी वेरी, यू हैव टू ब्रिंग अ न्यू काइंड ऑफ स्टोरी। अब जैसे फॉर एग्जांपल अभी जैसे जैसे हम आर्कियोलॉजी में एक्सकेवेशन करते हैं, तो नियोलिथिक एज है, और नियोलिथिक एज में अभी हम देखते हैं कि विमेन का, और उसके बाद में इंडस वैली सिविलाइजेशन जो एज है उसमें हम देखते हैं कि विमेन का जो कंट्रीब्यूशन है वो उस समय से ही आ रहा है। लाइक अभी हम जो वुमेन के जो स्टेटस है जो कि डिग्रेड हो रहा था, और अभी इक्वलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, बट नियोलिथिक एज और मेसोलिथिक और फिर इसके बाद में अपना इंडस वैली में वुमेन के स्टेटस इक्वल था। और आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन से ये पता लगता है कि विमेन, और या फिर जो उनके बोन्स वगैरह मिलती हैं, तो उनसे ये पता लगता है कि दैट उनका स्टेटस इक्वल था, एंड वुमेन वर आल्सो द हंटर्स, वुमेन हंटर्स थी। और अभी जब अभी ऐसे सोचते हैं कि वुमेन जो है हंटिंग काइंड ऑफ एक्टिविटी नहीं कर सकती थी, वो डोमेस्टिक करती थी, तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज हो जाती है। मैंने इसका एग्जांपल इसलिए लिया क्योंकि मैं एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ता हूँ, तो मैं आर्कियोलॉजी की एग्जांपल्स, आर्कियोलॉजी की केस स्टडी पढ़ता हूँ, उसमें पता लगता है कि वुमेन्स वर हंटर इन दोज एजेस। तो ये एक नई चीज हो सकती है। और ऐसे ही आप कुछ ना कुछ आप ऐसा पेक्यूलियर चीज लेकर आइए उस टॉपिक के बारे में विच कैचेस द आई ऑफ द एग्जामिनर इन द इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन ध्यान रखना है आपको, इट हैज टू बी ऑफ 200 वर्ड्स ओनली। उसमें क्या होगा, उसमें क्या होगा कि आपको एक तो टाइम बचेगा आपका, क्योंकि लिमिटेड इंट्रोडक्शन लिखना है, बाद में आपको बॉडी कंटेंट भी लिखना है, कंक्लूजन भी लिखना है, तो टाइम बचेगा आपको अगर आप वो रहेंगे। दूसरा, आपको क्या होगा कि आप कम वर्ड्स में आप अपने आप को एक्सप्लेन कर देंगे। जो स्टोरी आप, जो इंटरेस्टिंग फैक्ट स्टोरी आप बताने वाले हैं उसको ड्रैग मत कीजिएगा, इतना ड्रैग मत कीजिएगा कि एग्जामिनर समझ ही ना पाए, कंफ्यूज हो जाए। और इतना भी उसको स्टोरी को बताते हुए कंक्लूड मत करना, स्टोरी वहीं के वहीं कंक्लूड नहीं करना है उसको, यू हैव टू कीप द स्टोरी ओपन काइंड ऑफ, और एक्सप्लेन कर देना है कम वर्ड्स में। So that should be the introduction. That is not the only one kind of introduction. That is one of the strategy which I have adapted. So I will talk about the introduction strategy of other kinds also. So उसमें ये होता है कि you explain the topic. वो भी एक strategy होती है. You explain the topic with the current affair, something with some facts and data. वो भी एक strategy होती है. फिर now you come to the main body part. See, आप अभी जो आपने जो ऐसे टॉपिक सेलेक्ट किया है, गिव अराउंड 30 मिनट्स। सर, आई हैव वन क्वेश्चन। यस यस सर, इन philosophical essays, how can we use other methods in introduction, like you said we can use statistics and current affairs. Yes. In philosophical essays, it becomes Yes. really difficult to bring those dimensions in introduction. Yes. Okay. Complete your question. So there are my question is, एक मिनट में इंटरप्ट करूंगा रंजीत। दीपक, इसका सेशन 1 मिनट बचा है, तो दूसरा लिंक मैंने भेज दिया है सभी के व्हाट्सएप पर, तो जैसे सेशन खत्म होगा हम लोग दूसरे लिंक से जुड़ जाएंगे। ओके, फाइन सर, ओके, थैंक यू। ओके यस यू आर राइट। जो फिलोसॉफिकल ऐसे हैं उनमें हम फैक्ट्स वगैरह डाटा में डिफिकल्ट हो जाता है, दैट इज वेरी राइट। लेकिन जैसे उसमें दैट कम्स विद द प्रैक्टिस कि आप कौन से वाले टॉपिक में कैसा आप इंट्रोडक्शन प्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने डाटा और फैक्ट्स के साथ में मैंने बोला कि करंट अफेयर भी आप पुट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, फिलोसॉफिकल ऐसे है, और अभी करंट अफेयर में से रशिया यूक्रेन का वॉर चला पिछले 1 साल से, ठीक है। अब रशिया यूक्रेन वॉर वाज नॉट ओनली अ जियोपॉलिटिकल सिचुएशन, उसके अंदर इतनी सारी कहानियां आई थी that even Russian soldiers were not ready to fire on the Ukraine soldiers. Even the mothers of the Russian soldiers, they were asking their son to come back. ऐसी कहानियां आपने सुनी होंगी। वो कहानियां जो इमोशनल हैं, जो कहानियां जो फिलोसॉफी